end to the Taliban insurgency in Afghanistan, and that we work together for common interests, because, as I said, nobody has an interest in an unstable Afghanistan. Pakistan doesn't have an interest in that. India doesn't have an interest in that, and the United States doesn't have an interest in that. So this is an area where I would hope all the countries could recognize the different interests, but also a common interest in stability. The last questions, and very quick. You know that Pakistani nations, let's say that government to government, very good relationship. But the Pakistani nation also look at Americans' behavior and American activities in politics. You know that you have signed so many agreements, free trade agreements with different countries, which is not doing so much for America, but Pakistan is doing so much for America. Why not you really talk to the Nancy Pelosi or your party to really look into this project, to do some free trade agreement or give the market access to the Pakistan product or relax in the tariff? Well, we are looking at ways to expand the economic relationship between the United States and Pakistan. One of the areas we're looking at is actually a bill that I'm very involved with, which is to create reconstruction opportunity zones within Pakistan and ROZs, and that goods made within those zones in Pakistan would have duty-free access to the U.S. markets. That would be a first step toward a greater amount of trade between the United States and Pakistan. As you know, there are many countries in the world with whom we still do not have free trade agreements. I think that should be a goal. It's a very important goal. But let's get this bill passed first. It's passed out of the House of Representatives. But what about the Senate? Are you helping us? Well, we're working very hard. I, in fact, talked to the White House. I talked to people in the administration within the last week. We're trying to find a way to get the Senate to join the House in passing this bill so that the President can sign it. Thank you very much, sir, for your kind time and your availability at this place. And thank you very much, Mr. Lodi. He's a very dynamic and a very vibrant businessman and individual here in local California. And please give attention to California is one of the most important states. It is a very important state, and I'm very pleased to be here with Mr. Lodi. Thank you very much, sir. This evening. Thank you. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे लोकल ग्लोबल। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपके शहर में, स्टेट में, सिटी में कोई प्रोग्राम इवेंट हो रही है तो हमसे ज़रूर रब्ता कायम करें, हमारे ब्यूरो चीफ से रब्ता कायम करें। ब्यूरो चीफ के नंबर इस बार हम दे रहे हैं अपने, ताकि आप उनसे रब्ता करें और अपने होने वाली इवेंट की हमें इत्तला करें, या अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसकी फुटेज हमें बहुत पाबंदी से भेजें, और दैट फुटेज शुड बी वेरी प्रोफेशनल, जिसमें साउंड, वॉइस और आपकी पिक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए। हम बहुत तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप सफ़ीर पाकिस्तान देख रहे हैं, और अब सफ़ीर पाकिस्तान मुख्तलिफ सेगमेंट लेकर आ रहा है, जिसमें आपने बताया था कि ब्रेकफास्ट मीटिंग इन डिफरेंट स्टेट एंड सिटीज़ टू अंडरस्टैंड योर व्यूज़ एंड ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अलावा एक और प्रोग्राम आ रहा है हमारा, द कैपिटल क्लाइमेट, व्हाट हैपनिंग इन वाशिंगटन DC कैपिटल हिल, क्या सेनेटर कांग्रेसमैन सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, और क्या कुकिंग हो रही है on that area. That's very important. That's coming soon on this platform, नाज़रीन। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि सफ़ीर पाकिस्तान आपकी अपनी आवाज़ है, आपकी पहचान है, और ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। ये मेरा नहीं, आपका प्रोग्राम है। नाज़रीन, इस बार सफ़ीर पाकिस्तान Jio TV is a major media partner with अपना is one of the leading organization in America, in the world, जिसमें पाकिस्तान से फारिगुल तहसील वो तलबा जिन्होंने मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज से तालीम हासिल की और अमेरिका का रुख किया, अब उन्होंने एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो पाकिस्तान की भी मदद कर रही है मुख्तलिफ चैरिटीज़ और NGOs के अंदर और अमेरिका में भी। तो नाज़रीन, इस बार सफ़ीर पाकिस्तान Jio इज़ ए मेजर मीडिया पार्टनर टू सपोर्टिंग अपना एफर्ट्स एंड अपना एक्टिविटीज़ इन अमेरिका एंड पाकिस्तान। तो स्टे ट्यून्ड विद सफ़ीर पाकिस्तान, दिस इज़ योर वॉइस एंड योर चॉइस। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।